Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss chapter number 14 चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास जिसमें टॉपिक है Boolean of two spheres and quotient of restitution. न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टेट करता है कि when two bodies imping their relative velocity जब दो बॉडीज imping करती हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या करते हैं आपस में along the common normal उनके अंदर relative velocity की नॉर्मल के ऊपर होती है after impact bars they are the constant ratio that to that before impact where E is the constant depending upon the nature of the material of the bodies composed and 0 less or equal to 1 is less or equal to 0 जो है वो less or equal to E है और E less or equal to 1 है This constant E is called quotient of restitution. For an elastic impact, E is equal to 1 and for a perfectly inelastic impact, E is equal to 0. Elastic impact के लिए E की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए और inelastic के लिए 0 होनी चाहिए. If 0 less than E less than 1, the Boolean is said to be inelastic. Now we consider the problem of Boolean of two spheres. अब हमने Boolean जो है दो spheres की उसको डिस्कस करना है which are moving along the line जो मूव करते हैं किसी लाइन के along joining their centers को ज्वाइन करते हुए we take x as ox along the line of centers एक्सिस को हम लाइन ऑफ सेंटर के along कंसिडर करते हैं and use the following notation mass of the spheres m1 m2 और उनकी जो वेलोसिटी है बिफोर Boolean v1 u1 u2 है एंड या mu1 mu2 एंड आफ्टर Boolean है u1 u2 ये यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड है ऑफ इंपल्सिव रिएक्शन की मैग्नीट्यूड है देन वी हैव m1 into mu1 minus mu1 बराबर है माइनस की यूनिट वेक्टर सो m2 into mu2 minus mu2 बराबर है 3 यूनिट वेक्टर नेक्स्ट हमने क्या करना है p यूनिट वेक्टर की वैल्यू यूज करनी है m1 into mu1 minus mu1 बराबर है माइनस m2 into mu2 minus mu2 m1 mu1 plus m2 mu2 बराबर है m1 mu1 plus m2 mu2 the last equation is evident otherwise also since impulsive action and reaction are only internal to the system impulsive जो action और reaction है ये internal है to the system
system, and therefore the total linear momentum of the system should remain unaffected by the cooling. ये लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या होता है अनअफेक्टेड रहता है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यू टू माइनस न्यू वन बराबर है माइनस ई इंटू न्यू टू माइनस न्यू वन बराबर है ई इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू solving equations 14.4 and 14.5 for mu1 and mu2 we get mu1 बराबर है m1 minus em2 divided by m1 plus m2 plus m2 divided by m1 plus m2 into mu2. Similarly, mu2 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 plus m1 divided by m1 plus m2 plus m2 minus em1 divided by m1 plus m2 into mu2. For perfectly inelastic spheres, वो spheres जो inelastic हैं, E is equal to 0 and we obtain V1 is equal to V1 minus V2. There is thus no rebound and after the collision the spheres move with same velocity. It can be proved that if the spheres are elastic and have the same mass, they exchange velocities after impact. Next है हमारे पास Poisson hypothesis. This is an alternative to the Newton's law of restitution. According to the hypothesis, when two bodies come into conflict, ये एक ऐसा hypothesis है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं वो कांटेक्ट में होते हैं. There is a short interval in which they undergo compression and during this interval the centers of the two bodies get closer and closer to each other. जो दोनों बॉडियों का सेंटर है वो एक दूसरे के क्लोज से क्लोज हो जाते हैं. As a result of the deformation of the two bodies, दो ऑब्जेक्ट्स की डिफॉर्मेशन के रिजल्ट में ड्यू टू इम्पैक्ट दिस इज फॉलोड बाय another short interval. ये एक दूसरे शॉर्ट इंटरवल से फॉलो किया गया है in which जिसमें the original shapes of bodies are restored. जिसके अंदर बॉडी की जो ओरिजिनल शेप है वो क्या होती है रिस्टोर्ड हो जाती है. At the instant of greatest compression, the bodies move with common velocity and the centers of the two bodies are nearest to each other. वो ऑब्जेक्ट जो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं और सेंटर जो है उनका एक दूसरे के करीब होता है during the interval of restitution, the interval in which the bodies regain their shape. The impulsive pressure between the bodies is less than the impulsive pressure during compression in the ratio. The impulsive pressure है during compression in ratio E1
I1 और I2 क्या है? इम्पल्सिव प्रेशर्स हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेस्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। I1 और I2 क्या है? Impulsive pressure and during the restitution. According to above hypothesis, I1 is equal to EI. I2 is equal to EI2. I1 और EI1 जो है वो I2 और EI1 आपस में इक्वल है। That U जो है वो कॉमन वेलोसिटी है बॉडी at the instant of greatest compression के ऊपर। Then for compression वही है M1 mu minus M1 mu1 बराबर है I1 minus I1 वाव M2 mu2 minus M2 mu2 M2 mu minus M2 mu2 बराबर है I1। For restitution we get M1 mu nu1 minus M1 mu बराबर है minus E I1 M2 mu2 minus M2 mu बराबर है E I1 where nu1 and nu2 are final velocities of the bodies after restitution। We have no full equation which can be solved for nu1, nu2, mu I1 to prove the equivalence of Newton's rule and the above hypothesis. We determine u from equation 14.6 and also from equation 14.7 we obtain m1 m2 into mu1 minus mu2 बराबर है m1 plus m2 into I1 m1 m2 into nu2 minus nu1 बराबर है E into m1 m2 I1 by division we get v nu1 minus nu2 minus nu1 बराबर है E into u1 minus nu2 nu1 minus nu2 बराबर है E and minus E into nu1 minus nu2 which is Newton's rule as stated below। Motion relative to the mass center. The problem of impact of two spheres becomes easier to solve if we choose a frame of reference relative to which the mass center of the system is at rest before collision. It remains at rest after the collision. We have m1 mu1 minus m2 mu2 बराबर 0 के m1 nu1 plus m2 nu2 बराबर है 0 के v1 minus v2 बराबर है minus e into mu1 minus mu2 v1 बराबर है माइनस ई न्यू वन न्यू टू बराबर है माइनस ई न्यू टू। Therefore, the components of velocity are reversed in sign as a result of the collision। The component है velocity को उनका sign reverse है and multiplied by the quotient of restitution। अगर kinetic energy before collision tau है and after collision tau dash है तो tau बराबर होगा 1/2 m mu 1 square plus m2 mu2 square tau dash बराबर है 1/2 into m1 mu1 square plus m2 mu2 square into v square tau and hence the loss of kinetic energy is tau minus tau dash बराबर है 1 minus e square into tau since e less or equal to 1 है kinetic energy is lost always except when e is equal to 1 in the case of perfect elasticity।